नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू हरिताज कॉन्वर्जेशन। सॉरी दोस्तों, आज बहुत ही कम नोटिस दी थी आप लोगों को। सुबह सुबह ही सेशन डिसाइड किया। एक्चुअली वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। आई एम सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और हम दोनों कहीं ना कहीं मिलते हैं, वो है इंडिया। सो वी वर ट्राइंग टू डिसाइड द टाइम विच we can target England, we can target Australia, and we can target India. So usi chakkar mein I could not give you the advance information, but thank you so much who is joining and who is putting the thumbs up. Really appreciate that at the moment. इंटेंशन ये है कि डॉक्टर मनन, आपने नाम भी सुना है और आपने पहले भी मेरे साथ कॉन्वर्जेशन में उनसे बात की होगी. इज अ वेरी गुड फ्रेंड. ही इज अ specialist in psychiatry. He moved to England now. So he'll be helping the patients in England as well. He also helped the people in India with his talk. He's helping the Australian, Indian, and people across the world who is watching and who will watch it after that. So, Dr. Manan, let me give you a brief introduction about you. You are specialty doctor in NHS, specialty in psychiatry. You talk a lot like me, so people can see you almost on the different sessions, seminars, events, organizations, TEDx, all the post. And also, if you want to read him, he writes for Divya Bhaskar and Nobad in Gujarati. So welcome, Dr. Manan, to Harita's conversation. Thank you for having me, Harita. And I'm glad that we finally were able to make it work at a time where it's good with people in Australia, with people in India, and people in UK. So we've finally been able to make this work, because for all the viewers, we've been trying to set this up for ages now, I think. And Yes. yeah, I'm glad, and it's always a pleasure to talk to a friend. Cool. So the thing is, why we two are here today is because tomorrow is World Mental Health Day. And if you think about the mental health and आपका नाक चढ़ जाए कि अरे यार फिर से ये लोग आ गए, फिर से वही बात करेंगे, then this year's theme, it's very interesting. This year's theme is mental health in unequal world. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म इसमें आ रहा है, कहीं पर ये कम्युनिटी एस्पेक्ट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड अक्रॉस. लेट्स बिगिन विद द कमेंट फ्रॉम डॉक्टर मनन. What do you think about this theme? I think it's a very interesting theme, isn't it? Because right now, more than ever, the inequalities in our society have come to the surface. Be it the Black Lives Matter movement in USA, be it because of the COVID pandemic, the economic inequalities between people are also coming to the forefront. So it's a time when the divide between people, and we also see, the politics being very divisive in almost every country in the world, because we have nationalist leaders in positions of power these days, don't we? Yeah. So it's a very interesting thing, because even though there is a lot of inequality in terms of socioeconomic variables, in terms of politics, in terms of the color of your skin, but what matters is that mental health does matter at the end of everything. And I think that it's a beautiful concept. So it's a beautiful concept, and we all know that the mental health matters. But sometimes उसको सुन के नाक चढ़ जाता है कि अरे यार ये लोग वही बात करेंगे, वही मानसिक. हमारा Right. दिमाग ठीक है, पागलों के लिए ये सारी चीजें होती है. ये ख्याल, this idea comes always often. So how do you think, this social or the equal things, it's coming into the world, as you have also said, like लीडरशिप हमारी चेंज हुई है ज्यादातर दुनिया के देशों में. कहीं ना कहीं उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट भी बहुत चेंज हो चुके हैं उसके हिसाब से. तो किस हिसाब से ये जो इनइक्वालिटी है वो मेंटल हेल्थ को असर करती है, या यूं कहें ओवरऑल वेलबींग को असर करती है? बहुत मैटर करता है ना, क्योंकि जिस आज मैंने एक कोट पढ़ा था, किसी ने आई थिंक फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर किया था, कि a lot of a lot of people who are not as financially stable as even you and I are, let alone people like गर्भ Yeah. श्रीमंत लोगों को छोड़ दे, but even middle class average Joes like us, we can Yeah. still afford to talk and discuss about mental health, discuss about depression. But Yeah. someone who's just struggling to make a living,
someone who is making sure that they are working double shifts and 2 3 jobs at a time to make sure that their child gets food on the table. They Yeah. can't afford talking about their mental health. They can't afford seeking help for depression, and hence inequality changes how much mental health is accessible to you. If there is, it is not just stigma which usually gets in the way. While most of the governments in the world today offer free treatment for mental health, including इंडिया में आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके साइकाइट्री डिपार्टमेंट में जाके आप थेरेपी मेडिसिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं. सो technically speaking, it is approachable, that help is available. But when we look at time as a resource, when we look at the kind of commitments that people have, uh, inequality does get in that way as well, doesn't it? Because um, even though mental health is technically accessible, it's still not accessible. So Yeah. there has to be some sort of an equal level playing field where people can seek help if and when needed. And we need to look at mental health not just from the point of view of कि ट्रीटमेंट करानी जरूरी है या हेल्प सीख करनी जरूरी है. जैसे आप डेंटल हाइजीन के बारे में सोचते हैं, जैसे आप Yeah. फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, वैसे पॉजिटिव mental health and just good hygienic techniques which will help your mental health be stable. टॉक्सिक Okay. टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, मैं हमेशा आई शुड बी एट द टॉप ऑफ माय वर्ल्ड एवरी मोमेंट एंड एवरीथिंग. बट आई Yeah. कैन बी इन चार्ज ऑफ माय इमोशंस. I can make sure that I know what my strengths and weaknesses are, and I can be in a position where I know who I am talking to, where I am talking, and how I am talking. My mind is not playing tricks on me, and किसी का Yeah. गुस्सा मैं किसी पे उतारूं, कहाँ का मैं कहीं और उतारूं. Yeah. And it's like, sometimes it's like, you are not sure if it's just the mental health issue or if just the toxic thoughts it's coming in your mind, और या फिर ये सिर्फ टेम्पररी कुछ चीजें हैं. उसमें अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है. सोशली इनइक्वालिटी की तो पूरी बात ही अलग है कि वो लोग अगर दिल में कोई ख्याल आता है तो जनरली उसको इग्नोर कर देते क्योंकि वो ख्याल उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, या फिर वो ख्याल उनकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा नहीं है जिस पर उनको फोकस करना है. और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये ख्याल आते हैं बट वो सोचते हैं कि ये शायद टेम्पररी मूड स्विंग है, थकान की वजह से, या एक बैड कुछ हुआ उसकी वजह से. हाउ व्हाट इज द थिंग हैपेंस व्हेन वी टिक आउट, एज यू सेड, डेंटल हाइजीन की हिसाब से हम वी नो एवरीथिंग. हाउ डू वी नो अबाउट द मेंटल हाइजीन? व्हाट टू बी डन? I think the first thing is being consciously aware of what I'm feeling right now. Because what happens a lot of times is we tend to stay in denial of whatever we are feeling. And Agree. what happens as a result of it, if you're specifically, say, you're in a position of power or authority and you have juniors working for you, or if you're a teacher and you have students work, हम सबने एक ऐसा टीचर तो देखा ही है ना अपनी लाइफ में जिसके बारे में अपन बोलते थे कि आज उसको डेफिनेटली घर पे झगड़ा हुआ है. क्यों हाँ, हमको क्यों पता चल जाता था? क्योंकि हमको पता है कि वो वहां का गुस्सा यहाँ पे निकाल रहा है. जी. बट दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट अवेयर कि वो Yeah. घर का गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकाल रहा है. इफ वी आर अवेयर कि हाँ यार आज ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, आज घर पे ये प्रॉब्लम हुआ या आज यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ, तो आई एम नॉट फीलिंग ऑल राइट एंड इट्स Yeah. ओके. So that itself is mental hygiene ki that I don't feel well right now, and hence I should not take major decisions, or hence I need to be a little bit more careful with my students or juniors right now, because definitely आपको कोई juniors है उसी को displacement बोलते हैं. So when we are frustrated in one thing which we cannot speak something about, or we cannot ventilate it there, and we let it out on someone who is less powerful than us, then it is called displacement in psychiatry, Yeah. psychology terms. तो जब हम ये डिस्प्लेस करते हैं तो वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर कि आई एम पिस्ड ऑफ दिस पर्सन. What ends up happening is we end up, that steam needs to go somewhere. Okay. So we end up getting it out in unhealthy ways, and that's not good hygiene. Yep. So the more we are consciously aware of our emotions, the more mental hygiene we have, that all right, this is what I am feeling right now, तो मैं यहाँ पे थोड़ा केयरफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और यहाँ पे मैं थोड़ा ये करूंगा वो करूंगा. That is mental hygiene, I think. Okay. We are talking about the inequality, and one of the very important and the major thing comes in my mind is
the way the COVID pandemic brought the inequality, and also the refugee crisis, whether it's because of the situation emerged in Afghanistan or in the African countries where there is a constant war. Even in Burma, still the issue is struggling. How do you see those factors affecting the well-being or the mental health of overall world? Because uh, first question is, does it affect, or if it affects, how does it affect? Because I think when we see that, somewhere we also feel something about that. Absolutely. Another, example to just add to what all the Yeah. wonderful examples that you quoted is Sushant Singh Rajput's suicide. Hmm. We all felt stressful because of it, didn't we? Even though कितने लोग हम में से कितने लोग थे जो सुशांत को पर्सनली जानते थे, but it moved a part of us. It made us Hmm. think about life because that's Hmm. a person who we saw on screen playing wonderful characters, and it just shook a part of us. So Yeah. yes, political instabilities, riots. There have been thousands of studies Hmm. on what kind of an impact does political instability, riots, loots, an area where there is the crime rate is much higher as compared to the Hmm. area where crime Hmm. is almost non-existent. All this does play a major role on our mental health because it gives us a sense of stability or instability. So if Hmm. you live in an area where there is no theft, you can leave your doors open, you have good job stability, your family is doing all right. That is the ideal world, isn't it? And you'll be happy. Yeah. But Hmm. if we are living in an atmosphere where I constantly feel कि मैं लॉक चेक कर लूं क्योंकि ये चोरी हो जाएगा वो चोरी हो जाएगा, I constantly feel under threat because of my last name, because of my surname, because of the religion that I follow, because of the Hmm. kind of clothes that I wear. Like in Canada, this thing is, an ongoing controversy where hijabs have been banned by a particular state. A particular Hmm. province has just completely banned it. So you can't wear your religious clothing, and Yeah. that definitely does tend to hamper our mental health because it disallows us from following the religion that we have born in and we've been Hmm. brought up in. So I think it's very pertinent to the fact कि your बेसिक जो हमारी जो नीड्स होती है, बायोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना, फूड, शेल्टर, हाउसिंग, ये सब चीजें अगर स्टेबल है तो हमारी मेंटल हेल्थ काफी बेटर रहती है. एंड वी कैन थिंक बियॉन्ड दैट. वी कैन Hmm. थिंक अबाउट हायर एम्बिशंस. वी कैन थिंक अबाउट Hmm. बेटर थिंग्स वी वांट टू अचीव. और पेंटिंग करने का आपको तभी भी टाइम मिलेगा ना जब आपके घर में खाना पीना सब कुछ होगा. वो बिल्कुल बिना ट्रू। पेंटिंग तो नहीं कर सकते. यू कांट. आप हॉबीज नहीं पाल सकते. इसीलिए शायद कहा जाता है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। जी। Absolutely. So, Manan, before we end the session, because this topic is not just like, we can finish in 10-15 minutes. It's going a large because there are so many of the underlying issues as well. But how do you think as a person, as an individual, I don't care about the refugees, I don't care about Sushant Singh, I don't care about what is happening around the world. I'm the person. How do I, किस तरह से एक इंडिविजुअल की तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस इनइक्वल वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग को बेहतर बनाने के लिए इस एरिया में, एक ऐसे ऐसे इंसान के जिसको दुनिया की कोई नहीं परवाह और उसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए आइडियली। और वो भी फ्री में. द बेस्ट वे हाँ। टू कंट्रीब्यूट इज टू जस्ट स्प्रेड आउट पॉजिटिविटी. वी ओके। वी सी आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं. आपको उसमें किसी का बुरा करना नहीं है. आपको कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं करना है. जस्ट आप, इफ यू आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड यू आर मीटिंग 5 people, दैट टेक एन इनिशिएटिव एंड से गुड मॉर्निंग टू देम. बी काइंड टू पीपल. अगर कोई आपके साथ नेगेटिविटी कर रहा है या टॉक्सिसिटी कर रहा है, जस्ट ट्राई एंड इग्नोर दैट. ट्राई एंड फाइंड योर वेज अराउंड इट एंड जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिविटी एस्पेक्ट ऑफ इट. And that ओके। is the easiest way to contribute to even world mental health, because if everyone starts doing that in your surroundings, imagine if everyone just focuses on your positive aspects, you focus on only their positive aspects, and you don't talk negativity, you don't talk bullshit, you don't gossip about people, you don't say bad things about people. That is the easiest way to keep your mental health intact, and also keep others mental health intact. Just be kind and positive to each other. I think that's the easiest. And refrain from judging people because इसने ये किया इसलिए ये ऐसा इंसान है, या उसने वो किया इसलिए वो ऐसा इंसान है. अगर आप किसी को जज करोगे तो आप भी दुखी होने वाले हो. यू आर पुटिंग इन नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड, एंड यू आर गिविंग नेगेटिविटी टू दैट पर्सन एज वेल.
To each his own. मनन ये बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन No, इसका उतना ही इम्पॉसिबल जैसा है. I know it's difficult to practice it 100%, but if we make an active effort to do even 1% more than what I did yesterday, like if I'm getting this urge to say something bad or feel something bad, and I tell myself कि नहीं ये मैंने कल सुना था ना, let me see how I feel. Okay. Let me see how I feel if I don't do it, and let me see how I feel if I just greet this person who has been very annoying to me, but let me just try and be positive with that person. Let's see how it goes. Okay. And see how it goes. Every day take a one step. One step. Okay. उसी बात से मुझे याद आया, before I end, I think this is somewhere it connects. I don't know, but I have a habit to keep a smile on myself. So I was working with one of the very well-known broadcasting services, and one of my colleagues, he had somebody guest. So मैं उनकी टेबल से निकल रही थी और अचानक से मैंने स्माइल दी. वो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी स्माइल दी. वो जो मेरे कलीग थे वो मेरे को और उनको देख के थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क से देखने, बोलते आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हमने बोला नहीं. द थिंग इज कि हम दोनों ने एक साथ जवाब दिया नहीं, और फिर भी लगा कि ये दोनों हंस क्यों रहे. हमने बोला हंस नहीं रहे, हम सिर्फ स्माइल दे रहे हैं दिखाने के लिए कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर हियर और मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ. और इट्स सरप्राइजिंगली जो गेस्ट आए थे उनका भी वही जवाब था. सो हम दोनों इतना खुश फील कर रहे थे उस दिन. आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि उस दिन सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान की वजह से इतनी एक स्टोरी क्रिएट हो गई और एक मेमोरी क्रिएट हो गई जो आज भी इतनी ही अच्छी तरीके से जिंदा है मेरे यादों में. Absolutely. That's the perfect example of just spreading out positivity, and that's what we can do. That will make us happy. उससे हमको भी थोड़ी खुशी मिलेगी, and the other person will also, because you're just giving positivity, aren't you? You're not doing anything. आपने कोई words use नहीं किए. You just gave a smile and you got a smile in return. And even if at that point in time there was something bothering you at the back of your mind, or even if you weren't very pleased to see this particular person, the fact that the other person smiled at you gave you a lot of brownie points, because you did positivity and the other person was positive with you as well. Yeah. So I think this is the simple thing. And on that note, we are ending this conversation, but very important announcement. Every month you will find me and Manan. हर महीने मैं और मनन टपक पड़ेंगे और हम बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर आपसे बात करने जा रहे हैं. हम कोई एक्सपर्ट की तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आम इंसान के तरीके से बात कर रहे हैं, ताकि जैसे कि कहा कि एक साधारण इंसान जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सके. और उसी लाइन का हमारा उद्देश्य है ये एक मंथली सीरीज शुरू करने का. आप कोई विषय चाहते हो या आपको कोई सजेशन देना हो, क्वेश्चंस हो, कैसा लग रहा है, प्लीज आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आई एम अवेलेबल, आई एम हरिता. And also all the videos, all the updates available on YouTube as well. The channel is Harita Mehta. So go do subscribe, follow, share if you like it. And I hope to see you all, whosoever is there, and gave us a lots of thumbs up. Thank you so much. Keep in touch. Stay with us next month because it's going to be very, very interesting. बता दो, थोड़ा सा हिंट दे दूं? Sure. So 31st of October is a very special day. We know it's the National Unity Day for India और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है. तो सोच लीजिए उसी के आसपास कुछ मेंटल हेल्थ की बात भी होगी. अगर सोचना है, सर खुजाना है तो आप कर सकते हो. See you again next month or by the end of this month, maybe on 31st of October. Follow us and more episodes coming up.